on the second last stanza of this poem, Daffodils, and the stanza is, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be the gay in such jocund company. I gazed and gazed, but little thought what worlds the shore to me had brought. Students, in stanza 3, paraphrase can be that the waves in the bay also seems to dance, but the daffodils look happier. The poet couldn't avoid being happy in such circumstances. I did a great deal of gazing, but didn't fully appreciate the moment at the time. इस स्टैंजा में पोएट ये बात बताना चाहता है कि वेव्स जो हैं वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही हैं, वो भी मूव कर रही हैं, लेकिन वेव से ज्यादा खुश जो है वो डैफोडिल्स लग रहे हैं। अब ये पोएट को कैसे पता चलता है? वो इस बात को एग्जिजरेट करता है क्योंकि फूल जो हैं डैफोडिल्स के वो ज्यादा मूव कर रहे हैं। That's why he was saying that the daffodils look more happier than the waves. वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि किसी भी पोएट के लिए, किसी भी शायर के लिए ये सीन किसी खुशी से कम नहीं है। इस सीन को देखना किसी भी शायर के लिए पुरमसरत मौका है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी का मौका है ये, क्योंकि मैंने उसे देखा, फिर देखा और बार बार मैं इस सीन को देखता रहा, लेकिन फिर भी मैं इस सीन की खूबसूरती को अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। So students, this was all in this stanza. Hope you understand it well. Let's move to the last one.